The strangest thing, by the way, this has always existed in content, linguistic content, and how advertisers approach it. तो जो रेट होता है ना, एडवर्टाइजमेंट रेट होता है, हमेशा डॉन का टॉप पे रहा है. डॉन का जंग से भी ज़्यादा होता था, डॉन का काविश से भी ज़्यादा होता था. हालांकि काविश की और जंग की दोनों की रीडरशिप ज़्यादा थी. I'm sure, बहुत ज़्यादा. but Right? prestige. And Exactly. And Yeah. recently we were having a conversation with Mr. Paki, and he was like, "हाँ यार, मैं तो अपना पूरा English में बनाता हूँ अपना content ना." And I wondered, I was like, "Well, how are you?" You know, he's like, "No, bro, but मतलब हाँ, there's all sorts of people who are consuming it, but then the advertiser looks at it and goes, हाँ ठीक है, I'll pay you more." Yeah. Right? That's always been a thing in Pakistan, and because what is understood is कि the person who's speaking English has a greater purchasing power parity. And I'll than give the you person- an exact example of the flip side of this, but which proves the same point. वो middle class Usman, the YouTube kid, he has, I don't think he's making much money at all from sponsorships. ये वो, like he is not approached by sponsors, even though उसकी viewership is huge, especially compared to Mr. Paki. उसकी viewership is huge. बाहर से बहुत सारे उसको foreign viewers हैं उसके, like people from Pakistan who moved abroad. Comments उसको आते रहते हैं कि हाँ मैं भी यहाँ पढ़ा था, मैं भी यहाँ किया था, वगैरह वगैरह वगैरह. He's not making a lot of money because he is not burger. That's the first podcast that we मेरा भी ever. एक सवाल है. हाँ. Yeah, go ahead. मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे जितने भी ये जो न्यू राइज ऑफ डेली व्लॉगर्स है और Oh my God, फिर से हो रहा है? नहीं मतलब काफ़ी टाइम से हो रहा है, नया नहीं है. अच्छा, ओके. और वो सारा वो वाला है कि ब्रॉडकास्टिंग योर लाइफ, बस Sure. कोई नो एज सच एडिट कोई खास. तो some of them get million, 1.5 million, almost 2 million views a day. लेकिन और मैं ये अक्रॉस द बोर्ड बात कर रहा हूँ, किसी एक बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ. अक्रॉस द बोर्ड किसी के पास भी कोई खास स्पॉन्सर्स नहीं आते हैं. Yeah. अगर आते भी हैं तो वो थोड़े से शेडी टाइप के, कोई बेटिंग कंपनी, कोई ये वो, कोई भी बिग नेम्स, कोई MNCs वगैरह कभी भी नहीं. मैं देखा ही नहीं. इक्का दुक्का कभी हो गया तो हो गया, लेकिन नहीं आता. तो वो MNCs किसके पास जाती हैं? Mr. Wagi. MNCs जाती हैं इरफान भाई. मिस्टर पाकी के पास. हाँ. थोड़ा बहुत मेरे पास, पतंगीर के पास, और राना हमजा अभी अबरार भाई के साथ हुआ. बट उसामा? व्हाई नॉट गो विद पीपल. हाँ, उसामा. व्हाई नॉट गो विद पीपल जिनके पास मतलब मिलियंस ऑफ आईबॉल्स अ डे. If I'm The being, first- it's exactly the same thing. ना जो argument थी वो ये थी कि it wasn't even just the purchasing power parity. That's just one paradigm of it. The other thing was everyone who's going to make a decision, who's actually going to matter. Everyone who's going to buy a Rolex, for instance, Rolex ad देता था डॉन को. Rolex ने कभी काविश को नहीं दिया. हालांकि मेरा आर्ग्यूमेंट ही ये था उनके साथ कि भाई सिंधी आपके जितने भी जो प्रोमिनेंट सिंधीज होते हैं Yeah, वो रोलेक्स yeah. नहीं पहनते. Yeah. But they're like नहीं 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 वो भी डॉन पढ़ेंगे. डॉन हर कोई पढ़ता है. डॉन जो है वो बताएगा उनको तो वो खरीद लेंगे. It's No, also but यार One of मुझे भी ये मैं तो थोड़ा मार्केट के हवाले से नहीं, मैं तो फ्रॉम अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू सोचता हूँ. तो मुझे भी ये लगता है कि जिस तरह मार्केटिंग एजेंसीज में एंड द वे ब्रांड्स वर्क, आई थिंक अगर कल को मैं आउडी ले लूँ तो मैंने 1-2 दफ़े पहले भी ये पॉडकास्ट पे बोला है, मैं ओवरनाइट अपने प्राइसेस डबल कर सकता हूँ. Yeah. यार ऑडी में घूमता है, ये मांग सकता है. हाँ. तो आई थिंक ये वाली भी चीज़ भी होती है. No, but the first thing that Irfan Bhai told us when we had our first podcast, those are 19-20 mein, with Irfan Bhai, was like, Pakistani audience will not be able to provide English mein karo podcast, bahar ki audience chahiye. Remember when you've been having a second English channel, Irfan Bhai? Once upon a time. Third. हो रहा है, वो हो रहा है. 2020 से हो रहा है, by the way. तो उसी वक्त ना we clocked it. We were like, ठीक है. And then once the backward point videos started blowing up, most of them were interviews, but we made it a point कि we were going to stick with English. क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला आ गया था हमारे podcast में कि we got a lot of Urdu audiences coming in because of Mohammad Haris and Azam Khan and all that. तो वहाँ पे me and Bashar had a conversation. Do we pivot and start talking in Urdu and get that audience, or do we stick to English? Yeah. And we stuck to English, and I'll tell you something. The money that we made on the Mohammad Haris Azam Khan podcast, उसका जो CPM था,
and the CPM that we get now on just like 7,000-8,000 per episode, completely different. Yeah. Like the money, the Azam Khan podcast made us maybe $100, and now like just for 8 to 10K a video, जो English based audience है, जो audience बैठी हुई है UK, like you know diaspora जो है, that makes us half of that. So 8,000 views पे we get half of that money, and that did like 300,000. Yeah. So Well, there is I'll definitely a disparity. I'll tell you something. मैं बस एक लाइन मुझे बोलनी है. मुझे तो काजी भाई से मेरी बहुत दफ़ा डिस्कशन हुई है, और हम कभी ना कभी इंग्लिश चैनल बनाएंगे, लेकिन डिस्कशन ये हुई है कि विद 100-200,000 सब्सक्राइबर्स प्योरली इंग्लिश स्पीकिंग बाहर रहने वाले, you can easily make a living. Yeah. You can बहुत बोल दिया आपने. live 50 to 60K पे you can. 50 to 60,000 subscribers पे you can do this. 100-200 पे तो you're living comfortably. You can live anywhere in the world, not just in a third world country. Because what we also did was we launched our Patreon. ठीक है? And Patreon पे we wanted to see how these people will translate over to a really core fan base. Yeah. And we got about 20 people signed up, and all of them are Pakistani, but none of them live in Pakistan. That's it. सही बात है. And ये like, बहुत अच्छी so बात now आपने that बताई. makes sense to me. ये नहीं, बहुत इसमें- अच्छी इसमें बात भाई- आपने बताई, क्योंकि I started my Patreon, and I had, I think, crossed 1 million subscribers. Yeah, I think 8-9 lakh तो होंगे, and the maximum amount of members I got was I think 40-45. तो Yes. मतलब Foreign. Sorry. No, but we really push our Patreon, by the way. Like, we don't have sponsors, we don't have ads, but हम ad breaks बनाते हैं अपने podcast में to pitch the Patreon के भाई इधर आओ, this is where the community is. हाँ, And वो भी Kazi- करता है ना ये नाइस डैड का भाई. हाँ. yeah, I think it's worked beautifully for us. Like, it's that community that's grown there is amazing. And they're like diehards. Okay, shut up. I think it's Kazi. interesting. I think it's interesting when you say when you talk about the CPM now. So I've done 160 podcasts, right? And in addition to everyone here, we've had some episodes that have blown up. Yeah. Guess how much money I've made total from that YouTube? Your total YouTube channels है 500 बंदे होंगे. 1,000 बोलूंगा मैं. $130. नहीं यार. Right? नहीं यार. What videos actually went crazy? It wasn't the ones where I was speaking in English. कौन सी the ones that went crazy? इरफान भाई के साथ, हमजा के साथ, रुमैसा के साथ. These are the videos. जोखे भाई के साथ, right? These are the videos that went crazy. कौन consume करता है? Crazy. That's insane, Kazi bhai.